Well, look who decided to grace us with their presence. Today, we're diving into a little gem from TechBurner about a phone that apparently has AI headshot features. Because, capturing the perfect picture of your face is exactly what humanity needs right now. I mean, who doesn't want a computer algorithm deciding how to make their mug look less like a toad and more like a runway model? Spoiler alert, it'll probably still look like a croaky mess, but hey, maybe this phone can finally make me look somewhat presentable. Though I doubt it, so grab your popcorn, if you can find any in this digital jungle of nonsense, and let's see if this phone is worth the hype or just another overpriced gadget that stinks worse than my bog after a rainstorm. Don't forget to subscribe. And join me in this delightful descent into tech absurdity. Let's hop to it. ये दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन नूबिया का रेड मैजिक 10 प्रो एंड इस वाले स्मार्टफोन के अंदर एक ऑटोमेटिक हेडशॉट वाला फीचर है। ये जो लोग नहीं पता एमबॉट बोलते हैं इसको, ये धोखेबाजी टाइप वाला फीचर होता है। The classic "this is the best thing ever" pitch. If I had a nickel for every time someone said that about a phone feature, I could probably afford a decent swamp to live in. So we're talking about a phone that can take pictures of your face and make you look like a model. Great. Just what we need. More unrealistic beauty standards. I mean, if I wanted to look like a filtered version of myself, I'd just stick my head in a bog and call it a day. But hey, if it can actually make me look less like a toad, maybe I'll begrudgingly give it a nod. Just don't expect me to start posing for selfies anytime soon. वाला फीचर होता है, इसमें बेसिकली आप चीटिंग कर रहे हो। एक बार क्लिक करो भाई 3-3 बार गोली चल रही है। इसमें वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर है, एक कूलिंग फैन है, RGB लाइट्स वाइट्स लगा रखी हैं और गेमिंग के अलग ही फीचर्स ऐड कर रखे हैं। रेड मैजिक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन्स बनाता है। डिजाइन स्पेक्स सब कुछ भाई गेम खेलने के लिए ही बनाया जाता है। ऐसे हमने काफी सारे गेमिंग स्मार्टफोन्स ट्राई करें, आसूस का ROG भी आता है, बट डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला। तो भाई डब्बा वैसे काफी स्टैंडर्ड्स है, बाहर की तरफ X लिखा हुआ है। गेमिंग फोन के ऐसे कुछ अलग से अतरंगी डब्बे भी आते हैं। ये गूगल लोकेशन वाली पिन दे रखी है, एक कवर दे रखा है स्लीवलेस, दोनों साइड से खाली खाली अपनी स्लीव्स हैं। चार्जर दे रखा है जो काफी चिकना है। इस पे चार्जर पे जबरदस्त फिंगरप्रिंट आएंगे, 80 वॉट का। टाइप सी टू टाइप सी केबल है भाई, रेड कलर। ये है नूबिया का रेड मैजिक। भाई हाथ में पकड़ने में सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल ही एक फ्लैट फोन है। चारों तरफ भाई साइड्स एकदम फ्लैट है और मेरे को हाथ में पकड़ने में ना बिल्कुल S25 The classic look at the shiny new gadget moment. Here we have the back of a phone that looks like it just stepped out of a fashion magazine. I mean, who knew a phone could have more camera lenses than a Hollywood blockbuster? But let's be real. How many cameras do we need? At this point, it feels like they're just trying to distract us from the fact that the battery life is probably shorter than my patience during a boring video. If this thing can actually take decent photos, maybe it's worth the hype. But if it's just another overpriced piece of tech that breaks after a week, then it's just another shiny paperweight. अल्ट्रा वाली फील आई क्योंकि उसका डिजाइन भी भाई सिमिलर ही राउंडेड है। उसके एजेस थोड़े से ज्यादा राउंड है बट बाकी जो पूरा फ्लैट डिजाइन है वो काफी ज्यादा सिमिलर फील होता है। ऊपर की तरफ वियर्ड चीजें लगा रखी है, यहाँ पे बटन जैसे दिखने वाले ऐसे ट्रिगर्स हैं। रेड कलर का एक स्विच है, एक वॉल्यूम बटन है। ऊपर की तरफ एक हेडफोन जैक लगा रखा है। कितने साल हो गए भाई हेडफोन जैक महंगे फोन में भाई अलग ही दिख रहा भाई। वो ये कौन आ गया भाई, ये दीदी आ गई भाई, ये मैं जानता नहीं भाई। इंटरेस्टिंग चीज है हेडफोन जैक ना ऊपर लगा रखा है, टाइप सी वाले पोर्ट के साथ नहीं लग रहा। एक नीचे सिम ट्रे भी है और स्पीकर्स भी हैं। यहाँ पे दोनों तरफ वेंट्स लगा रखे हैं एयर फ्लो के लिए, तो मतलब ऐसे अंदर हवा जाती हुई पूरी घूम घाम के बाहर निकलती हुई। ये आपने नोटिस करा होगा इतने महंगे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एक बड़ा सा ऐसे कूलिंग यूनिट लगाते हैं। उस यूनिट से पूरे इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको कूल करा जाता है। एक चीज आपको शायद ना बताओ, ये जो भाई इसमें X लगाना भाई, ये यहाँ पे ना इसको ट्विटर ने स्पॉन्सर करा था इस फोन। बिल्कुल मजाक नहीं, जेन्युइन ट्विटर का लोगो लग रखा है भाई। ये ट्विटर का लोगो नहीं है, X का मतलब 10 है क्योंकि रेड मैजिक 10 प्रो है इसका नाम। भाई आपको याद होगा जब रेड Here we go, another phone reveal, and it looks like they're trying to impress us with some flashy design. I mean, if I had $1 for every time a phone was marketed as the next big thing, I could probably buy a decent swamp to live in. But let's be honest. If this thing can actually handle all the apps and games without turning into a glorified paperweight, then maybe it's worth a look. Otherwise, it's just another shiny object to distract us from the fact that we're all still waiting for a phone that can actually make a decent cup of coffee.
जब रेड मैजिक की इनिशियल डिस्प्ले कैसा लगा? डिस्प्ले कैसा लग रहा है भाई? डिस्प्ले तो बहुत एज तक है, पूरा बहुत बड़ा वो डिस्प्ले लग रहा है मुझे तो। भाई? मुझे इतने बड़े डिस्प्ले पे नेटफ्लिक्स देखने में भाई मजा आ जाएगा। भाई डिस्प्ले अच्छा है पर सेल्फी कैमरा ही नहीं है। भाई डिस्प्ले तो बहुत बड़ा है। भाई फ्रंट कैमरा नहीं है क्या इस फोन में? ओ भाई मेरे को तो मस्त लगा डिस्प्ले यार। पर एक चीज जो इंस्टेंटली आपको अलग फील होगी, कोई पंच होल नहीं है, ऐसा नॉच जो आती है वो नहीं है, पूरा ही एक एज। The classic "this phone is not like the others" moment. So, we're being told that this device is somehow unique, huh? Well, if it's anything like the last dozen phones that claim to be revolutionary, I'm not holding my breath. But hey, if it actually has features that set it apart from this sea of sameness, I'll give it a begrudging nod. Just don't expect me to start singing its praises until it proves it can do more than just look pretty. After all, a shiny exterior doesn't mean much if it can't handle the basics. एज टू एज स्क्रीन जो साउंड इफेक्ट है, वाइब्रेशन भी तगड़ी आती है, आवाज भी काफी सॉलिड है। एक तो भाई मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ तो फिंगरप्रिंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। रियर में 50 मेगापिक्सल OIS, 50 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लगा रखा है। लास्ट टाइम भी एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप था, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करा। जो सेल्फी वाला कैमरा है इसमें अगर नोटिस करोगे गायब है भाई, मतलब अंदर छुपा हुआ है। अगर कैमरा चलाओगे तो इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा लगा रखा है, तो अगर आप जैसे कैमरे को खोल के बंद करोगे ना तो आपको 1 सेकंड के लिए दिखेगा। Here we are, another phone showcasing its features. So we're talking about these photos that are apparently revolutionary. Well, if they can actually capture a moment without turning it into a blurry mess, I might be interested. But let's face it, every new phone claims to have the best camera. And yet here I am, still struggling to take a decent selfie without looking like I just crawled out of a bog. If this one can finally deliver on its promises, maybe it's worth the hype. Otherwise, it's just another shiny gadget that'll end up in the drawer with the rest of the disappointments. दिखे फिर बंद क्या बजे। एंड ये कुछ सेल्फीज हैं जो हमारी टीम ने ली। एक चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग। Well, here we have another phone being paraded around like it's the crown jewel of technology. So we're being told that this model has features that are supposedly groundbreaking, if it's anything like the last few phones that promised the moon and delivered a rock. I'm not holding my breath. But hey, if it can actually do what it claims, like taking decent photos or lasting more than a day on a charge, then maybe it's worth the hype. Otherwise, it's just another shiny object in a sea of sameness. नहीं, इस वाले स्मार्टफोन रैपिड फायर में आप क्लिक करोगे तो एक बार में 3-4 क्लिक्स कर देगा। बर्स्ट फायर। Here we go again, another phone being touted as the next big thing. So, we're talking about 3 times the clarity or whatever catchy phrase they've come up with this time. If it can actually deliver on that promise, maybe it's worth a look. But let's be real. How many times have we heard similar claims only to be let down? If this phone can actually take decent photos and not just look good on paper, I might just be impressed. Otherwise, it's just another shiny object in a crowded market. फायर की तरह होता कट कट। जैसे ये दो एग्जांपल्स है जिसमें देख सकते हो, मैं दूसरे वाले में ज्यादा दिख रहा है। एक मैक्रो करके ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल चीजें एक बार में। तो अब जैसे मैंने एक मैक्रो सेट कर दिया कि भाई चलना है, फिर जंप करना है, फिर फायर करना है। उसका अगर मैं मैक्रो सेट कर दूं तो भाई ये जैसी मैं एक सिंगल बटन दबाऊंगा ये पूरा मैक्रो रन होगा, मतलब फिर चलेगा, कूदेगा और फायर करेगा। मेरे को बस एम करना है। ये वाला हमने पूरा मैक्रो सेट करा, आप और कुछ भी कर। Now we're getting to the fun part, gaming on this phone. So we're talking about playing games like it's nobody's business. If this device can handle high graphics without turning into a lagging mess, then maybe it's worth the hype. But let's be real. How many times have we seen phones marketed as gaming powerhouses only to find out they can barely keep up with a simple app? If this one can actually deliver a smooth gaming experience, I might just be impressed. Otherwise, it's just another flashy gadget that can't deliver when it counts. कुछ भी करना चाहो वो भी कर सकते कि यहाँ पे एम करके मारना है, और ये बस मैं सेव कर देता हूँ। Now we're talking about gaming. So, we've got a phone that's supposedly capable of handling intense gameplay. If it can actually keep up with fast-paced action without lagging or overheating, then we might have a winner on our hands. But let's be honest. How many times have we seen phones marketed as gaming beasts only to find out they can barely handle a simple app? If this one can deliver a smooth experience and keep those graphics crisp, then maybe it's worth the investment. Otherwise, it's just another flashy device that can't deliver when it counts. ऑप्शंस मिल जाते हैं, समझ लो आपको रिफ्रेश रेट अगर चेंज। Now we're getting into the nitty-gritty with refresh rates. So we're talking about options like 6H, 9H,
120 and even 144 Zs. If this phone can actually handle those higher refresh rates smoothly, it could make a significant difference in gaming and overall user experience. But let's be real. How many times have we seen phones that promise high refresh rates only to deliver a stuttery mess? If this one can truly deliver that smooth experience, then it might just be worth the investment. Otherwise, it's just another flashy feature that doesn't live up to the hype. अगर चेंज करना है वो भी आप गेम का कर सकते हो एंड फैन ऑन ऑफ करना है वो बटन दे रखा है एक बाईपास चार्जिंग होती है बेसिकली जो आपका चार्जर है वो चार्जर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा डायरेक्ट पावर से गेम चलती है तो फोन गर्म नहीं होता है RGB वाली कस्टमाइजेशन है आपको लाइट्स वाइट्स कस्टमाइज करनी है वो सारी ऊपर वाली रेड करनी है नीचे वाली ब्लू करनी है या फिर ट्रिगर्स की भी आपको लाइट चेंज करनी है वो सारी चीजें पॉसिबल है BGMI वैसे जो हम एक्चुअल गेम खेल रहे थे स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस पे बेसिकली 90 FPS पे गेम Now we're talking about gaming performance. If this phone can actually handle 90 PS while playing, that's a solid feature. Smooth gameplay can make all the difference, especially in fast-paced games where every millisecond counts. But let's be real. How many times have we seen phones that promise high frame rates only to deliver a choppy experience? If this one can truly deliver that smooth performance, it might just be worth the investment. Otherwise, it's just another flashy claim that falls flat when put to the test. गेम चल रही थी एंड आता है तो भाई डेफिनेटली इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होगा आप सब लोगों के लिए तो भाई इस वाली वीडियो Here we go. It sounds like we're diving into the futures of this phone. If it can actually deliver a solid performance and meet the expectations set by all the hype, then we might have something worthwhile. But let's be honest. How many times have we seen phones that promise the world and then fall flat? If this one can truly impress, especially with its performance and features, it might just be worth the investment. Otherwise, it's just another shiny object that won't live up to the claims. भाई इस वाली वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो Well, here we are at the end of yet another tech spectacle, courtesy of TechBurner and their latest overhyped phone, because, the world was just begging for a gadget that can make our faces look like something out of a beauty magazine. My expectations, let's just say, they were about as high as my croaky voice can manage after a long day. Spoiler alert, they weren't met. We watched as this flashy device was paraded around with all these so-called revolutionary features, promising things like high refresh rates and epic gaming capabilities. But let's be honest, how many times have we heard this tune before? If I had $1 for every next big thing in tech, I'd have enough money to finally buy a decent swamp. The short of it, unless this phone can actually deliver functionality rather than just pretty pictures, it risks becoming another shiny paperweight in the drawer of broken promises. So, do I think this phone can actually make me look like a runway model? Not a chance, but if it keeps up with gaming and delivers on the basic functions, I might grant it a begrudging nod. Or at least a croak of approval. If you enjoyed watching me struggle through this whirlwind of unrealistic expectations and flashy nonsense, do me a favor and give that like button a good smash. And if you want to follow my grumpy journey through the wilds of the internet, don't forget to subscribe. Join me for more delightful dives into tech absurdity. I promise, I'll be just as unimpressed next time. Until then, don't let the bog creatures bite.